Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and we'll continue our chapter, that is chapter number 21, Neural Control and Coordination. Dear students, in the previous video, we have talked about the structure of a neuron. Now we know that the human nervous system is basically made up of the neurons or the nerve cells, right? So now in today's video, in today's module, we'll be talking about the generation and conduction of nerve impulses. How information travels from one neuron to another, how that information is generated and how does it travels from one neuron to another neuron. Okay, and that information is called as a nerve impulse. Okay. Now neurons, basically, dear students, neurons, they are special type of cells because these are excitable cells. Okay, the neurons, these are excitable cells, means they get excited when they receives the information, and information travels in the form of electrical signals, right? Information always travels in the form of electrical signals. So the neurons, they are excitable cells and information travels in the form of electrical signals, right? Okay, so let's talk about the conduction of the nerve impulse. Now nerve impulse, the transmission of nerve impulse is referred to as electrochemical phenomena. Okay, it is called as electrochemical phenomena, and it basically occurs in 3 steps. The first step is the maintenance of resting membrane potential. As I told you, dear students, neurons are excitable cells and the information basically travels in the form of electrical signals, and their membrane, the membrane of the neuron, it is in a polarized state. Okay, it is in polarized state. Okay. So first stage, which is called as the maintenance of the resting membrane potential. Second is the action potential, and third is the movement of the action potential or the propagation of the action potential. So how information travels from one neuron to another, it is basically involves your electrical signals as well as your chemical signals. Mostly it is electrical signals, but at the end, in the nerve endings, then this electrical signal is converted into a chemical signal. That is why we say that impulse, the movement of impulse from one neuron to another is an electrochemical phenomenon. Okay. Now let's talk about the very first step, that is a maintenance of resting membrane potential. What does this exactly means? So generation, okay, so first is maintenance of resting membrane potential. See, when the neuron is not passing any information, okay, when neuron is not passing any information, then we say that the neuron is in resting stage. Okay, again I am repeating, when neuron is not passing any information, so we say that the neuron is in resting position or it is a resting neuron. In that condition, the axonal membrane is more permeable to potassium ions. Dear students, we know that the neuron has axon. Okay, axon, you know axons? The long part of the neuron. So that part is more permeable to potassium ions and it does not allow sodium ions to move. तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये पोटेशियम आयंस को आने देती है लेकिन सोडियम आयंस को क्रॉस नहीं करने देती. क्लियर? सेकेंडली, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज आयंस. ये मेम्ब्रेन जो है, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस को भी मूव नहीं करने देती. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर स्पेसिफिकली. let me make this example very clear to you. So this is your axonal membrane. ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है ये आपके एक्सोनल मेम्ब्रेन को इंडिकेट करता है. तो अगर हम रेस्टिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, सो रेस्टिंग पोजीशन में दिस इज आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. Okay, this portion is the outer side of the membrane and this portion is inner side of the membrane. Clear?
Now on the outer side, see outer side of the membrane is positively charged. जो आपका बाहर की तरफ का मेम्ब्रेन है वो आप उस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बाहर सोडियम आयंस प्रेजेंट है. ओके, sodium ions, they are present on the outer side of the membrane. On the inner side is negatively charged. जो आपकी inner side है न्यूरॉन की, एक्सॉन की, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है क्योंकि वहां पर नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है. ओके, और वी कैन से नेगेटिव आयंस के साथ साथ पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट है. क्लियर? सो रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सोडियम आयंस दे आर प्रेजेंट मोर इन क्वांटिटी. सो ऑन द आउटर साइड द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. On the inner side of the membrane has more of negative charge and the potassium charge. So the inner side is negatively charged. Okay, understood? Now this portion which is indicated with the pink one, it indicates your sodium potassium pump. ठीक है, ये जो आपका रेड कलर या पिंक कलर जो इंडिकेटेड है आपके डायग्राम में, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है. Clear? Now this sodium potassium pump does not allow the sodium ions to go inside the cell, the axonal membrane. ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है ये पोटेशियम आयंस को अंदर नहीं जाने देता है, प्लस ये नेगेटिवली आयंस को बाहर नहीं आने देता है रेस्टिंग कंडीशन में. ठीक है, जब आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में है, सो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, प्लस आपका सोडियम पोटेशियम पंप, इट डज नॉट अलाउ सोडियम आयंस टू एंटर इनटू द इनर साइड एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट अलाउ द नेगेटिव आयंस टू कम ऑन द इनर साइड. क्लियर? चलिए इसी को हम एक नीचे डायग्राम में देखते हैं. लेट्स लुक एट द लोअर साइड. ओके, that was first was only a symbolic diagram. Now this is your exact diagram, this one. So देखिए बाहर आपका ये सोडियम पोटेशियम पंप है. ठीक है, बाहर आपके सोडियम आयंस प्रेजेंट है, अंदर आपके पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है. क्लियर? सोडियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन देखिए बाहर सबसे ज्यादा पोटेशियम आयंस है और सोडियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन वो आप आसानी से देख सकते हैं, इट इज 450 मिली. ठीक है, क्लियर? And on the inner side the potassium ions are just 20 mm, while on the inner side आपके negatively charged ions ज़्यादा हैं. So आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम आयंस को अंदर नहीं जाने देता और ना ही पोटेशियम आयंस को या नेगेटिवली चार्ज आयंस को बाहर आने देता है. सो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आपकी जो मेम्ब्रेन है वो आपकी बाहर पॉजिटिव है और अंदर की साइड नेगेटिव है. क्लियर? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए पोटेशियम यहाँ पर जो पोटेशियम है वो 400 mm है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जस्ट 50 mm है. सो रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑन द आउटर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑन द इनर साइड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, एज आई टोल्ड यू देर इज अ सोडियम पोटेशियम पंप. ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, तो रेस्टिंग पोजीशन में ये सोडियम आयंस को एंटर नहीं करने देता है अंदर की साइड और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बाहर नहीं आने देता है. राइट? नाउ व्हेनेवर देयर विल बी अ ट्रांसपोर्ट, इफ देर इज एनी ट्रांसपोर्ट दैट ऑकर्स थ्रू दी सोडियम पोटेशियम पंप, अगर इस सोडियम पोटेशियम पंप से ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, इफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप becomes active, so in that condition it will transport 3 sodium ions. Again understand, it will transport 3 sodium ions in exchange of 2 potassium ions. ठीक है, ये 2 पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज में 3 सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा. क्लियर? यानी 3 sodium ions they will be exchanged with 2 potassium ions. Understood? जब कभी भी ये आपका concentration काम करेगा तो इसे ये whenever it will operate it will transport 3 sodium ions
in exchange with 2 potassium ions. और जनरल कंडीशन में बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है, अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है. नाउ दिस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है आपका बाहर और अंदर की मेम्ब्रेन में, द आउटर साइड इट इज पॉजिटिव एंड ऑन द इनर साइड इट इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड अ रेस्टिंग पोटेंशियल. Okay, so the difference in the electrical potential across the membrane of the axon is referred to as resting potential. Okay, it is called as resting potential. Clear? Now let's start when impulse comes, when the information will come. Now second condition is when the neuron will receive the information. सो जैसे ही स्टिमुलस ट्रेवल करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, द मेम्ब्रेन, लेट्स सपोज ये आपकी जो ए साइट है, दिस इज ए साइट. ओके, दिस इज योर ए साइट, दिस इज योर बी साइट. सो द इंफॉर्मेशन फर्स्ट विल रीच टू ए साइट. जब भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले आपकी ए साइट पर आएगी. अंडरस्टूड? सो ये जो आपका रेड पोर्शन इंडिकेटेड है, दिस इज योर ए साइट. सो इंफॉर्मेशन फर्स्ट कम्स टू द ए साइट. As soon as the information reaches the A site, this particular portion it becomes permeable to sodium ions. जैसे ही ये information आपकी A site तक पहुंचती है, आपका एक्सॉन मेम्ब्रेन का ये पोर्शन सोडियम आयंस को permeable हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है. That means your sodium ions they will move inside. आपके सोडियम आयंस अंदर जाएंगे and your negative charge will move outside. Okay, this means your sodium potassium pump will start operating. आपका जो sodium potassium pump है, it will start operating. Okay, so at site A, at this particular position where the information is coming, sodium ions will enter inside the axonal membrane and your negative charges they will move outside the membrane. Clear? Now this stage, this particular process is referred to as depolarization. ठीक है, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन. जब आपका न्यूरॉन बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, तो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट. अब रिवर्स हो गई है पोलैरिटी. अब जैसे ही पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे, सो on the inner side will become positively charged. तो जो आपकी अंदर की साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और आपकी बाहर की साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. एंड दिस पर्टिकुलर रिवर्सल ऑफ द स्टेट विल अकर एट साइट ए. ये जो रिवर्सल है पोलैरिटी का, दिस विल ओनली अकर एट पोजीशन ए बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ओनली रीचिंग टू पोजीशन ए. ओके, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. तो ये जो आपकी स्टेज है इसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन. क्लियर? एंड दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की साइड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, अंदर की साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है. नाउ दिस डिफरेंस इन द पोटेंशियल ड्यू टू डीपोलराइजेशन across the plasma membrane is called action potential. ठीक है? Now this change in the potential difference across the plasma membrane due to the depolarization is called the action potential. Clear everyone? So this reversal of polarity at the two ends of the plasma membrane will be referred to as action potential. Okay everyone? Okay, now I hope you've understood. तो जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो साइट ए पर पहुंचेगी, योर सोडियम पोटेशियम पंप विल बिकम एक्टिव एंड द सोडियम आयंस दे विल मूव इनसाइड, द नेगेटिव चार्जेस दे विल मूव आउटसाइड. सो योर मेम्ब्रेन polarity will change. On the outer side it will become negative, on the inner side it will become positive, and this process is referred to as depolarization. And the difference in the membrane potential across the membrane is referred to as your action potential. Now how this action potential moves from site A to B? Now this is your site A. Now this action potential will travel to B also. Okay, आपका जो ये movement है,
अब ये A से B पहुंचेगा, then in this manner it will move further along the neuron. So this sequence, okay, this sequence it will be repeated along the axon, and the impulse will be passed from one neuron to another. Let's understand this. Again, I am repeating. Let's initially in the beginning, आउटसाइड मेम्ब्रेन जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, इनर साइड हमारी नेगेटिवली चार्ज है, और इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. फिर क्या होता है, मैसेज पी पर मैसेज आता है. एज अ मैसेज रीचेस टू पी, द सोडियम पोटेशियम पंप विल बिकम एक्टिव. नाउ सोडियम आयंस दे विल मूव आउटसाइड, sorry, the sodium ions they will move inside and the negative charges they will move outside. Negative charges बाहर आ जाएंगे. So इस particular portion में, ये जो आपका portion है P का, in this particular portion there will be change in the polarity of the membrane. On the outer side the membrane will become negatively charged, on the inner side it will become positively charged. So this stage is called depolarization. Now from this P, this is your P part, the information will then go to Q part. Okay, now again at this Q part, your sodium potassium pump will be active. Now it will pump the sodium ions inner side and the potassium on the outer side, or the negative charge on the outer side. So on this particular portion again there is change in the polarity. तो अब आपकी position Q पर भी polarity change हो जाएगी. ठीक है. सो पहले आपका मैसेज मिला P पॉइंट को, देन P पे पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर मैसेज पास हुआ P से Q पॉइंट पे, और Q पे भी पोलैरिटी चेंज हो गई. ठीक है. नाउ अगेन दिस फ्रॉम Q इट विल मूव टू द नेक्स्ट R पॉइंट. ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर R पॉइंट. सो अब आपकी इंफॉर्मेशन पहले P से Q पहुंची, नाउ फ्रॉम Q इट विल रीच टू R, एज यू कैन सी हियर. नाउ इन एडिशन टू दिस, अब ये जो आपका P पॉइंट था, दिस P पॉइंट, यहां पर वापस से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यस, द सोडियम आयंस दे विल बी अगेन ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड. अब आपका फिर से पोलैरिटी चेंज होगी इस पॉइंट पर, राइट. सो अगेन योर पोटेशियम आयंस दे विल बी एक्सचेंज्ड. अब आपके पोटेशियम आयंस बाहर आएंगे और आपके नेगेटिव आयंस अंदर जाएंगे, right? So potassium ions they will move on the outer side, negative ions they will go on the inner side. तो आपका membrane वापस से resting potential में पहुंच जाएगा at position P. ठीक है. So पहले message P को मिला, P से Q को मिला, right? From Q the message will travel to R. As the message goes to R, at P position there will be reversal of the polarity. So जो आपका P पॉइंट है उस पर आपके रेस्टिंग पोटेंशियल वापस से रिस्टोर हो जाएगा. क्लियर. और R पर आपका डीपोलराइजेशन होगा. फिर R से आपका अगेन शिफ्टिंग होगा S पर. अब आपकी जो यू कैन से नर्व इम्पल्स है दैट विल ट्रेवल टू S. जब वो S पर पहुंचेगी तो आपका Q पॉइंट पर रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? ओके. So this rise in permeability of sodium ions is extremely short lived. तो जैसे जैसे मैसेज पास हो रहा है, सोडियम आयंस की permeability रिवर्स होती है पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज में. ठीक है. And immediately your potassium ions they will diffuse outside the membrane and they will restore the resting membrane potential. तो as I told you, जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन और नर्व इम्पल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करेगी, so at the older point the potassium ions they will come on the outer side, negative ions they will move on the inner side, and the resting potential will be restored. Okay, so two things are happening simultaneously. First, information is passed to the next point, and secondly, the previous point is getting its resting potential back. Okay, so both these things they are happening simultaneously. Clear? So depolarization होता है,
डीपोलराइजेशन से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, देन एक्शन पोटेंशियल आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होता है और प्रीवियस पॉइंट पर आपका रेस्टिंग पोटेंशियल वापस से रिस्टोर कर दिया जाता है. क्लियर एवरीवन? नाउ दिस सीक्वेंस ऑफ पासिंग द मैसेज विल बी रिपीटेड अलोंग द एक्सॉन. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी रिसीव हो जाएगी. सो पहले P पर है, फिर Q पर पहुंचेगी, Q से फिर R and then is to S. So this is how your information or message is passing from one point to another. So depolarization process is occurring from P to Q, from Q to R and R to S. Clear everyone? And repolarization process is also occurring. So जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन P से Q जाएगी, Q से R जाएगी, so P पर आपका रेस्टिंग पोटेंशियल स्टोर होगा. फिर आपका मैसेज जो है R से S जाएगा, so Q पर रेस्टिंग पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा. देन योर मैसेज विल गो फ्रॉम S to T, तो आपके R पोजीशन पे रेस्टिंग पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? So this is how your message will pass. Now coming to the, you can see we can understand how does the membrane potential shifts from millivolts. So MV, so your membrane potential, it is in millivolts, right? We know potential difference, volts में measure होता है, right? So membrane potential we are indicating on the y-axis, okay? And then your time is indicated on the x-axis, and we draw a graph. Right everyone? So first stage is excitation. First stage is as you receive the message. So as the message is received, now just understand the membrane potential is at minus 70 millivolt. So whenever information is received, your membrane is having a potential, you can say a threshold potential, that is minus 70 millivolt. So at this 70 millivolt, your sodium channels they will open. The sodium channels they will enter into the cell. आपके सोडियम चैनल्स जो हैं ओपन हो जाएंगे, सोडियम सेल के अंदर एंटर करेगा और इनर साइड को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, और आउटर साइड को नेगेटिव बना देगा. सेकेंड स्टेज होगी, अब आपके पोटेंशियल चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयंस आपके अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जाएंगे. Clear? Third stage is, now if you look at it, as we're reaching third stage, now you see the membrane potential is plus 40 millivolts. So just imagine how the membrane potential is changing. So now your membrane potential is 40 millivolts. Now at this stage, your sodium channels, they will become refractory. Refractory means they will become stable, they will close, and no more sodium ions will enter the cell. Then afterwards, now your sodium potentials, they will keep on leaving the cell. आपके potassium ions जो हैं वो अभी भी सेल से बाहर जा रहे हैं. When they are going out of the cell, तो सेल के बाहर वापस से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, and that will restore the resting potential. And the final stage is your potassium ions will also close and sodium channels they will also close. Okay, then in the sixth condition, your extra potassium ions, the extra potassium ions which are present outside, they will diffuse away, they will move away. Okay, and again your membrane potential will reach back to minus 70 millivolts. तो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल वापस से minus 70 millivolts पर वापस रिटर्न हो जाएगा of the neuron cell, right? So the membrane polarity, it changes from one point to another, and this is how the message passes from one part of the neuron to the another part of the neuron, right? And this is always in the form of a electrical signal, right? And we know that electrical impulse cannot move without a potential difference. So that is why there is a difference in the potential. So this difference in potential will generate an electrical impulse, and that will travel from one neuron to the another. Right, everyone? Okay, so let's come to your homework for today.
So first of all, you will make notes of this topic, and secondly, you will read the page numbers 317 to 319. Dear students, just read these page numbers very minutely. Underline the important terms, make notes in a proper format, utilize your blue sketch pen, make headings beautifully, write date on every page, right? Okay? And if there is any query, any doubt that you are free to ask me. You can contact me personally on my personal number, right everyone? Okay, so that's all for today. Bye everyone.